So yes, after notochord, there is another way that how you can classify an organism, that is on the basis of the, reproduction. See, reproduction, that means you can say production, it's a kind of production, production of progeny, ठीक है, या फिर offspring you can say. Now the production of the progeny can be takes place by two means, either by asexual means or bisexual means. It's a kind of, you can say that there are two types of reproduction, you can say. Okay, let's have a look there. First one is sexual one. इस सेक्सुअल का मतलब क्या है, यहाँ पर दो पेरेंट्स आपके इन्वॉल्व हैं, टू पेरेंट्स involved. Okay, while in asexual, as if you want to see or if you want to check, asexual में आपका सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, दैट मीन्स ओनली वन पेरेंट इन. ओके, तो मोर आइडेंटिकल किसमें होंगे, इंडिविजुअल, ऑब्वियसली असेक्सुअल में, क्योंकि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है इसमें. ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि दो चीजें होती है आपकी, मोनोशियस, ठीक है, और एक आपके होता है डायोशियस. ये टर्म्स ना यूज होनी है आपकी, कि जो भी मतलब एक आपका मोनोशियस और एक है आपके डायोशियस वन, ये आपके टर्म्स यूज होंगे नेक्स्ट. कि मान लो हम पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं या एस्केलमिंथ्स की, किसी की भी बात कर रहे हैं कि वो डायोशियस है, मोनोशियस है. ठीक है, सो बिफोर सेइंग कि यस इट इज डायोशियस और मोनोशियस, ठीक है, यू मस्ट क्लियर कि डायोशियस क्या है, मोनोशियस क्या है. सी डायोशियस का मतलब है, आप एक अगर आपको क्लियर होगा, दूसरा अपने आप ही क्लियर हो जाएगा. डायोशियस का मतलब होता है कि जो सेक्सीज हैं इसमें, कि वो सेपरेट है, ये सेक्सीज आर सेपरेट. मोनोशियस मीन्स एक सिंगल, एट मीन्स जो सेक्सीज हैं जो वो सेपरेट, नॉट सेपरेट, ठीक है, वो सेपरेट नहीं है, यू कैन से. तो ये तो बात रही आपकी ना रिप्रोडक्शन के टाइप्स. हियर इन दिस लेक्चर इट्स नॉट लाइक कि आपको प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन देनी है कि व्हाट इज सेक्सुअल, क्या क्वालिटीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल दैट. आपको बस ये पता होना चाहिए कि मोनोशियस कौन से हैं और डायोशियस कौन से हैं, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसमें असेक्सुअल इन्वॉल्व है. ठीक है, यू मस्ट नो दैट. Then coming to the next thing, that is modes. If you're talking about the modes, so basically it can be by three types. It can be of three types. Okay, either by oviparity or oviparous, you can see. Okay, as you can see here, or like it may be ovoviviparous and viviparous. Obviously, see, if you talk about the oviparous, let's discuss this first. See, if you are talking about if you are talking about oviparous, let me just have an idea. See, this ov, just imagine or just learn that thing. Ov or ova stands for egg. Okay, so जो egg देते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स एग देते हैं, दैट मीन ले एग, इनको बोलेंगे हम ओविपेरस. जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, बर्ड्स हैं आपके, ठीक है, फ्रॉग है, ये क्या है, एग देते हैं, ठीक है, दैट मीन्स वो ओविपेरस हो. सेकंड मैंने आपको बोला वीवीपेरस. ओके, वीवीपेरस, वीवीपेरस में क्या होता है, दे डोंट डू नॉट ले एग. सी, ओविपेरस में क्या था कि ये एग आपके, ये एग दे रहे थे, फॉर एग्जांपल बर्ड्स एंड फ्रॉग, लेट्स से. ओके, और इन केस ऑफ वीवीपेरस दे डू नॉट ले एग. Okay, like us, like mammals. And also you can say viviparous के केस में क्या है कि जो भी डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर ही होगी, बट ओविपेरस में क्या होता है, वो बाहर होती है. Okay, see, just like let's first talk about the oviparous. Oviparous means producing young by means of eggs. ठीक है, वो eggs lay करते हैं, that hatch after being laid by their parents. Okay, such as in birds. सब कुछ प्रोटेक्शन सब कुछ बाहर मिल रहा है. ओके, सो इन केस ऑफ viviparous, producing young ones that have developed inside the body of their parent. That means हम, ठीक है, एग तो दिया बट बॉडी के अंदर ही हो रहा है जो काम हो रहा है. ठीक है, उनके
ओविपेरस वाले की तरह नहीं है, लाइक बर्ड्स की तरह नहीं है कि एक ही टाइम में बहुत सारे एग्स दे दिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो इन विविपेरस we never lay eggs, but yes, whatever it is developed inside the body of their parents, such as in humans. Okay? Now, ovoviviparous. See, let me just see. It's ovoviviparous. Okay, that means it is a combination of both. विवि में क्या होता है, एग नहीं देते, ओवो में क्या होता है, एग देते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एग तो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, हैचिंग भी होगी, हैच भी होगा, बट प्रॉपर यंग वन ही हैच होगा, ठीक है। मतलब जो डेवलप है, जो मेच्योर जो भी एग है, वो बॉडी के अंदर, पेरेंटल बॉडी के अंदर ही मेच्योर होगा, प्रॉपर मेच्योरेशन के बाद ही वो रिलीज आउट होगा, ठीक है। लाइक फॉर ओविविपेरस यू कैन से एग्जांपल फॉर दैट इज शार्क, okay? Just have a look. Producing young by means of eggs that hatch within the parent, okay, that hatch within the parent. So in case of viviparous, the egg will hatch outside the body, okay, that means not outside the body, but yes, it's like inside the body of their parent developed. Okay, so oviviparous may hatch within the parent. Fertil Then in fertilization, it can be of two types, okay. First is internal, and second one is external. See, first of all, before knowing these two terms, you must know what is fertilization. Okay, so fertilization, you can say it's something fusion of gametes. Okay, so अब ये जो फ्यूजन है गैमेट्स का, ये इनसाइड द बॉडी हो रहा है या फिर आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, दैट इज टर्म्ड एज समथिंग यू कैन से इंटरनल और एक्सटर्नल। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल मतलब इनसाइड, ठीक है। तो ये जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है बॉडी के अंदर हो रहा है, ओके। एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड, ठीक है। दैट मीन्स जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है दैट विल यू कैन से आउटसाइड हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। or internal is something you can say inside of the body, okay। So let's first talk about the external fertilization. See, male gametes swim to female gametes, दोनों ही केसेस में बात होगी, but in internal fertilization that male gamete will come inside the female gamete, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ सारी प्रोसेस बाहर ही होगी, एक्सटर्नल मीन्स बाहर। No copulation. Copulation means sexual intercourse of the male and female and the transfer of gametes. There is no such thing occurs. Only the male gametes will swim in water and get fertilized with the female that is already in the water in case of external. But in case of internal, there is copulation. Okay, that means sexual intercourse of male and female with transfer of gametes. Okay, then the male gametes are shed into a large space. There is a less chance of fertilization. ये बहुत ज़्यादा स्पेस में होते हैं, सो दैट मीन्स मे बी फर्टिलाइजेशन होती है या नहीं होती। बट इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत कन्फाइंड स्पेस में होते हैं आपके मेल गैमेट्स, सो देयर इज अ ग्रेटर चांस, इट्स नॉट इट्स अ चांस, इट्स चांस फर्टिलाइजेशन। एंड लाइक फीमेल गैमेट्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बट इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन फ्यू, और यू कैन से ओनली वन और टू इज देयर। So one or two भी नहीं, it's only one, okay। So zygotes develop outside male and female partner. This is very important point. In case of external fertilization, zygote, okay, so there you can say zygote जो है that will grow or that will develop outside, okay। While in case of internal, you can say zygote will develop inside of, okay। Then most common, if you want to have a further example for the same, so for external fertilization it is fish, amphibians and algae, and in case of internal fertilization you can say it's land, plants, reptiles and birds, okay। So this is the basic thing, ठीक है। जो भी मैंने अभी आपको बताया, like either from the like the notochord, fertilization modes of reproduction, the types of the reproduction, so many things I told you। मेन फंडा क्या है, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए एक्चुअल में है क्या,
ठीक है, क्योंकि जो आपके एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर आपको मेन ये चीज रिमेम्बर करनी है, ये चीज आपको याद करनी है यू नो, कि किसमें कौन सी चीज प्रेजेंट है, कि कौन सा एनिमल है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, और हमने फिर उसको कौन से किंगडम में रखा है, कौन से उसको फिर हमने फर्दर फाइलम में रखा है, ठीक है। किंगडम तो है आपका एनिमल, बट हमने फर्दर लाइक हमने बोला कोई एक्स टाइप ऑफ एनिमल है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो हमने उसको किसी और फाइलम में रखा होगा, लाइक सिलेंट्रेटा में रख दिया बिकॉज उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. So this is the main reason that I told you such thing. Okay? So just stay connected so that you will be able to clarify like porifera में क्या आता है ना. So let's have a look. That is porifera. ठीक है. सी पॉरीफेरा नाम से ही क्लियर है और समझ लेना इस चीज को, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी पॉरीफेरा मतलब पोर्स बियरिंग, कैन से इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस. पोर्स मींस छेद है उसमें, है ना, पोर्स है. अब उस पोर्स से क्या होगा, वो उसको ब्रीदिंग में भी हेल्प करेगा, फूड ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करेगा, काइंड ऑफ दिस यू कैन रिमेंबर. ओके, द मोस्ट कॉमन नेम फॉर दिस पॉरीफेरा इज स्पंजेस. ओके, स्पंज पता है ना, अगर आप उसमें पानी डालोगे तो पूरी स्पंज हैवी हो जाएगी, दैट मींस उसमें पोर्स है जिसने पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया. ओके, so something like that. So porifera का another name is sponges, as you can see there. Now these are mostly marine and asymmetrical. See, asymmetrical मतलब जैसे अगर आप इनको kind of this you can say इसका structure कुछ ऐसा सा होता है, अगर आप इसको divide करोगे तो ये equal parts में divide नहीं होगा, ठीक है. asymmetrical is something like that. And cellular level मतलब बहुत ही स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप, ठीक है. सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की. दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. अब इनका कैनाल सिस्टम होता है. अब ये क्वेश्चन आता है कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू होता है. ओके, so that water transportation through like osculum is there. Okay, so water enters through minute pores. pores के थ्रू, अभी मैंने आपको बताया pores की वजह से इसका नाम sponges, you can remember that. so pores जो है उसको बोलते हैं यहाँ पर ओस्ट्रिया, ठीक है. तो ओस्टिया के थ्रू वाटर होता हुआ स्पॉन्जोसील में जाता है. लाइक पहले ओस्टिया में जाएगा वाटर, ठीक है. ओस्टिया से कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में. ओके, एंड फ्रॉम स्पॉन्जोसील द वाटर विल गोना एंटर in the from where, like from spongosil it will gonna, yeah, it will goes out through osculum. Okay, I will tell you this. So firstly water enter कहाँ से गया, this is a water entering point, you can say. Okay, water entering point. So from ostia the water will enter, and from osculum it will get, goes out from their point. Now the question is, what is the role of that osculum? So it is required for food gathering, food को store करने के लिए, respiratory exchange and removal of waste. So this is the function for the osculum. Just let's have a look there. Next slide is for the porifera. Now as I told you that there is a canal system. कैनाल सिस्टम में जो लाइनिंग होती है दैट इज फ्रॉम पोलर सेल्स, ठीक है. जो लाइनिंग है, जो कवरिंग है कैनाल की, दैट इज पोलर सेल्स. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया. स्केलेटन जो है इसका प्रॉपर, जो पोरीफेरा का अगर पूरा स्ट्रक्चर देखो, सो दैट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स. ठीक, सी, sexes are not separate. That means another name for that you can say is hermaphrodite. Okay, let's hermaphrodite. So hermaphrodite means sexes are not separate. मतलब मेल फीमेल एक में ही है, सेपरेट नहीं है, ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट्स फॉर्मेशन. फर्टिलाइजेशन जो है इसकी इंटरनल है. सी, अब जो पॉरीफेरा है इसकी फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल. इंटरनल मींस हैचिंग विल टेक्स प्लेस इनसाइड, दैट मींस जो भी डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर होगी, ठीक है. तो so development is indirect. An example for the porifera you can say is cycle and sponging. Okay, just have a look. See in that diagram you can have a look
these pores. Okay, as you can see, this structure, these are pores, or the another name for that is ostium. Okay, here I mentioned. Okay, so in that you can have a look. Ostium and pore is there. So from there, from these pores, water will enter. Okay, water enter करेगा यहाँ से. ठीक है, कैनाल सिस्टम के थ्रू ये स्पंज सेल तक जाएगा एंड फ्रॉम स्पंज सेल बैक इनटू द ऑस्किलम. सो इट्स अ फ्रॉम इट जो वाटर है यहाँ से चला जाएगा ऑस्कुलम से. तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहले ओस्टियम में आता है, या फिर स्पॉन्जोसील में जाता है, एंड फ्रॉम देयर इट विल गो टू ऑस्कुलम. एंड व्हाट इज द फंक्शन फॉर दिस? फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन, फॉर फूड गैदरिंग. यू मस्ट रिमेंबर दैट, फॉर फूड गैदरिंग. Okay. Next phylum that we are having is Cnidaria. Okay, that is a Coelenterate. Okay, so these are certain nidoblast or nidocytes there. Now the thing is that जो भी इस पे present होता है इनकी tentacles पर, ठीक है, वो होते हैं आपके निमेटोसिस्ट. ये आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि जो निमेटोसिस्ट होते हैं वो कहाँ कौन से फाइलम में प्रेजेंट होते हैं. सो दैट इज ऑन निडेरिया. ठीक है, निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट ऑन निडेरिया. डाइजेशन जो है इसका दैट इज इनकम्प्लीट. ओके, फंक्शन अगर आप देखो निमेटोसिस्ट के, तो अटैचमेंट में होते हैं, एनकरेज दैट मींस अ काइंड ऑफ अटैचमेंट. डिफेंस, खुद को बचाने के लिए, वंस दे फाइंड दैट देयर इज सम काइंड ऑफ हार्म और सम काइंड ऑफ हंटर इज देयर, उनकी लाइफ खतरे में है, सो दे विल यूज दैट थिंग. that nematocyst will gonna help them. It's a kind of defensing system, and also to capture the prey, capture of prey, the function of the nematocyst. See, just have a look at what actually nematocyst. So a nematocyst is it's a specialized organelle inside a nematocyte. It is used for defense and prey capture. That means खाने के लिए भी यूज करेगा और बचाने के लिए भी. तो nematocyst जो structure, as you can see here, this is a capsule like structure. Okay, and this is a thread like structure. That means the very important thing, nematocyst present किस में है? Cnidarians में. okay? और उसका फंक्शन क्या है? डिफेंस और कैप्चरिंग. okay? Next one we are having is a Nitophora. okay? Nitophora का जो एक कॉमन नेम है दैट इज कोम्ब जेलीज. कोम्ब जेलीज. सो आपके क्वेश्चन मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है लाइक व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द नीटोफोरा. ओके, सो द कॉमन नेम for Nitophora is comb jellies or sea walnuts. Okay, sea walnuts. So these are diploblastic. Diploblastic, that means ecto and endodermal layer is present. Okay, radially symmetrical है. That means आप किसी एंगल से कट करो उसे, any plane. If you cut that organism in any plane, so they will give you equal halves. And इसकी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. देन बॉडी बियर्स 8 ciliated comb plates which help in locomotion. सी इसका नाम कॉम्ब जेलीज जो है बिकॉज इसके अंदर 8 प्लेट्स हैं कॉम्ब की, जो कि लोकोमोशन में मतलब मूवमेंट में. okay? लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट में हेल्प करती है. बायोल्यूमिनेसेंस जो है दैट इज प्रेजेंट इन नीटोफोर्स. सो दिस इज अ वेरी important question that you may get in a NEET exam too. कि जो bioluminescence है, see bioluminescence, luminescence you can say kind of light, and bio means living organism. that means अगर जो light है, okay, आपके living organism present कर रहे हैं, okay, so that phenomena will be termed as bioluminescence. okay, bioluminescence is the property of a living organism to emit light, and it is also present in always present in the Nitophora. Next thing, again this Nitophora is hermaphrodite. Okay, so this hermaphrodite means again sexes are not separate. okay?
फर्टिलाइजेशन जो है निटोफोरा की वो होती है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मीन्स जो फ्यूजन होगा गैमेट्स का वो बाहर होगा बॉडी से. ठीक है. डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट. एग्जाम्पल यू कैन हैव निटोप्लाना एंड प्यूरा ब्रांच. Here in that you can have a look. See, this is a very typical structure of the Nitophora. Okay, as you can see, अगर आप इसका digestive system देखें तो वो complete है because mouth is there and body is also there. Okay, and there are so many things. This is a structure that you have to draw in your notebook so that आपको easy रहेगा exam में. Next phylum that we are having is the Platyhelminthes. This is one of the most important. Okay, so now the question is why they are known as flatworms. Okay, why they are known as? It is just because they have dorso-ventrally flattened body. That's why they are known as flatworms. Okay, तो इनकी flattened body है. बायलेटरल सिमेट्रिकल है. अगर आप उसको कट करेंगे सो वो आपको कैसी शेप देंगे? इक्वल हाफ ही देंगे. ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब कि 3 जर्म लेयर्स है. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एक्टो, एंडो एंड मीजो. ठीक है. असिलोमेट्स है. ठीक है. असिलोमेट मीन्स दैट मीन्स नो बॉडी कैविटी. नो बॉडी कैविटी with organ level of organization. Hooks are suckers are present in parasitic forms. Okay, तो इसमें suckers होते हैं. And one of the most important question that you can get in your exam कि जो flame cells हैं वो कहाँ present होती हैं and what is the role of flame cells. So these flame cells are present in platyhelminths, and the role of this in the excretion and the osmoregulation. So osmoregulation, you can say process जो क्या करती है सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करती है. ठीक है. सॉल्ट और वाटर यू कैन सी ऑस्मोटिक बैलेंस यू कैन से. Okay, so osmoregulation is something that an excretion to excrete out the waste product from your body you can say. Okay. And they are endoparasites and the sexes are not separate. Okay, that means hermaphrodite. Okay. फर्टिलाइजेशन कैसी है इसकी? इंटरनल है और डेवलपमेंट बहुत सारी स्टेजेस होती हैं. ओके, एग्जांपल यू कैन हैव टेपवर्म, लीवर फ्लूक एक्सेट्रा. So fertilization internal, I already told you. Just if you don't have any idea like what is fertilization internal, so आप previous video check कर सकते हैं. You can have an idea like what is fertilization, what is internal fertilization. Just have a look. Platform के लिए आपका example like for platyhelminths, this is a kind of example like platforms. Okay, monogenian, flukes and tapeworm. Okay. So ये जो examples है you must remember them because in your exam you get that. Okay, so 1 marks and 2 or 3 marks along with the like what is platyhelminths and explain with example. Okay, give any 2 or 3 example of for the platyhelminths. Why platyhelminths are known as flat forms? You should know such kind of questions. Okay. Second thing we are having is Aschelminthes. Okay, second phylum that we are having. Now जैसे आपके platyhelminths थे platform, Aschelminthes है आपके Aschelminthes है आपके roundworm. Now the question is again roundworm क्यों है? क्योंकि इनकी बॉडी ना सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में काइंड ऑफ दिस, इट्स काइंड ऑफ दिस यू कैन से. सो सर्कुलर सेक्शन में है, क्रॉस सेक्शन में, इसीलिए आपके ये राउंडवर्म. ठीक है. फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है मतलब लैंड पे रहते हैं, पैरासिटिक है प्लांट्स में और एनिमल्स में. सिमेट्री कैसी है इनकी? बायलेटरल है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. दे आर स्यूडोसिलोमी. स्यूडो मीन्स बॉडी कैविटी आपकी स्कैटर्ड फॉर्म में, यू कैन से जो आपकी बॉडी कैविटी है जो
तो कैसी है आपकी, scattered form में. Can go in the previous video, just can have a check like what is a pseudocylindric, so you can have an idea. Scattered form में है या pouches की form में you can say. एलिमेंट्री कैनाल जो है मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका वो कंप्लीट मीन्स इनमें माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट है. देन दे आर डायोशियस. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डायोशियस के हैं सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं. फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल. फीमेल्स जो होती हैं वो लॉन्गर होती है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू मे गेट कि फीमेल्स का स्ट्रक्चर या फीमेल्स की जो बॉडी है वो लॉन्ग होती है कंपैरेटिवली टू मेल, वो कौन से फाइलम में, सो दैट इज इन एस्केलमिंथ्स. ओके, देन एग्जांपल इज यू कैन से एस्केरिस और राउंडवॉर्म, एरिया दैट इज फिलेरियल वन एंड साइक्लोस्टोमेटा. ओके, तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल. मतलब आपको इन शॉर्ट क्या याद रखना है, डेवलपमेंट कैसी है, ठीक है, सिलोमेट है या नहीं है, सच काइंड ऑफ थिंग. फर्टिलाइजेशन कैसी है, इसकी इंटरनल है, डेवलपमेंट इसकी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है. सो क्वेश्चन में कम इन योर माइंड लाइक व्हाट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट. सी इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि लार्वल स्टेजेस इंक्लूड होंगे. ठीक है, जैसे आपने फ्रॉग में देखा होगा ना, मेटामॉर्फोसिस यू कैन से काइंड ऑफ दैट. ठीक है, सो इनडायरेक्ट में क्या है, लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व है. बट डायरेक्ट में क्या है, लार्वल स्टेजेस नहीं है. डायरेक्ट जो आपका एम्ब्रियो है, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए. मतलब यू कैन से इन डायरेक्ट देयर इज नो लार्वल स्टेज. So in direct, no larval stage is there, while in indirect there is a larval stage. Okay, just have a look. As मैंने भी आपको बताया कि जो आपके एस्केलमेंट्स है इसमें जो फीमेल का स्ट्रक्चर है, फीमेल का जो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्ग है एज कंपेयर टू द मेल. ठीक है, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि सिलेंड्रिकल बॉडी और फीमेल में लॉन्ग है और इसमें आपकी स्मॉल है. एरिया इज अनदर एग्जाम्पल. Next phylum we are having is Annelida. ठीक है, Annelida is something you can say, annulus or rings are there. Terrestrial है और जो है, ठीक है, that means देखो एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल, मतलब कि लैंड पे भी रह सकते हैं और आपके वाटर में भी रह सकते हैं. बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है. You don't know that what is bilateral symmetrically triploblastic, so you can go in the previous video, just can have what type of it is. But still triploblastic means three closed circulatory system. क्लोज्ड होता है इसका मतलब इसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी सब इन्वॉल्व हैं. हार्ट से बॉडी की तरफ फ्लो हुआ है ब्लड का. Aquatic annelids like Nereis possesses lateral appendages, parapodia, phosphorus, parapodia हैं, phosphorus, nephridia. Okay, उसमें थी लास्ट वन में आपकी फ्लेम सेल्स, इसमें है आपकी नेफ्रीडिया, हेल्प करते हैं. नेफ्रीडिया किसमें प्रेजेंट होता है, एनिल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट कि नेफ्रीडिया किसमें प्रेजेंट होता है, आपके एनिमल. The neural system consists of a paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve core. Reproduction इसमें आपका सेक्शन है. That means two parents आपके इन्वॉल्व होते हैं. डायोशियस और मोनोशियस दोनों हो सकते हैं. For dioecious the example nemesis and for example is earthworm or leaf. And further you can say the example for the annelid is blood sucking leech is the Cnidaria and Paratima like earthworm, another example for the same. You can see the structure of the earthworm here. See that the different parts. These are the segments. This is the part and posterior, and that kind of
This one is the clitellum. It's basically reproductive part. It's a reproductive part. You can say so देखो यहाँ पर कुछ segments नहीं है, so it's a non-segment. It's a reproductive part. It's a non-segmented thickened part, as you can see. Compare में okay, thickened part है. Now the thing is ये करता क्या है? क्या ये reproductive part है, तो obviously reproduction में help करता है. तो ये एक viscous fluid बनाता है. Okay, क्यों? ताकि cocoon properly हम लोग तो cocoon बनाने में basically help to clitellum. Remaining lecture will be covered in the next video. So till then, do like and subscribe to my channel. Press bell icon to get new updates. Thank you so much and stay connected.